Number 14, show that the pedal equation of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 and is equal to 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to minus r square upon a square b square. Solution: the given equation is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Let x1 and y1 lie on equation 1. Then any point x and y lie on a given ellipse equation x1, then x1 becomes x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 becomes x1 whole square upon a square plus y1 whole square upon b square is equal to 1. Equation of the tangent: if a point is given for ellipse x equal into x1 upon a square plus y into y1 upon b square is equal to 1. First we find the distance, use the distance formula. Minus 1 region x1 at 0 is equal 0 0, x1 and y1 as a region are x1 and y1 are 0 0, then this equation become only minus 1. Distance formula: d upon the x1 whole square x1 and coefficient, this is now coefficient whole square plus y1 standard x and y whole square 1 upon whole square upon b whole square becomes square power 4 plus power 4. then we will p को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 upon p square becomes n squaring both side x1 and x square square root is eliminate plus y1 whole square upon a4 and plus y1 whole square upon b4 x1 whole square upon a4. Also x1 whole square plus y1 whole square is equal to r square. Now the eliminate x1 whole square and y1 whole square from 2 and 3 and 4 from 4 and 2 we have x1 whole square plus y1 whole square minus r square. First equation x square and plus y square is equal to, in p coordinates of spherical coordinate p r and phi and theta होते हैं. Then p is equal to r square x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आर हमारा पोलर फॉर एल्जेब्रिक में पोलर फॉर्म में लिखता हूँ. पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है. एल्जेब्रिक x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा and b square x1 whole square plus a square y square minus a square b square. Here we will use the elementary product. यहाँ हम इसे सोल्यूशन किया है x1 y1 होल स्क्वायर ओनली 1 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई माइनस आर स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस प्रोडक्ट. अब नाउ हम इसे आइडेंटिकली प्रूव करेंगे. x1 इज इक्वल टू फॉर दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज प्रोडक्ट बाय ट्रांसवर्सल इक्वेशन ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस r square minus b square whole common and divided by a square minus b square. A square common with this constant and y1 whole square is equal to minus b r square minus a square upon square minus b square. Substituting these values into the equation 3 we get. क्वेश्चन 3 में हम इसकी वैल्यू ऑफ जो अभी हमने फाइंड किया है x1 y1 रिप्लेस कर देंगे और कुछ टर्म्स काउंट होंगे. सिंप्लीफाई करेंगे आर स्क्वायर से. ये हमारे 1 अपॉन पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट एलसीएम लेकर यहाँ से ये जो विजिबल है ओनली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एब्सेंट है. सो बी स्क्वायर से हम प्रोडक्ट करेंगे बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी फोर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a4 और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर एब्सेंट है. सो हम यहाँ ए स्क्वायर से प्रोडक्ट करेंगे. ए स्क्वायर बी स्क्वायर
into a square minus b square. So LCM is equal to a4 minus b4 upon a square and virtually a square minus b square minus r square a square minus b square discussed by this a square b square. Now simplify a square plus b square upon a square b square minus r square upon a square b square is equal to 1 upon b square plus 1 upon a square minus r square upon a square. B square is the pedal equation. पैडल इक्वेशन है यहाँ हमारे p एंड r इज इक्वल टू कंपोनेंट जो है p और r के इक्वल आते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। तो हम ये यूज़ करते हुए x1 y1 होल स्क्वायर एंड p फॉर्मूला से फाइंड किया है एंड प्रूव द गिवन कंडीशन।